So good evening everyone. So today we're going to this is the statistics lecture and this is the lecture number 6. So before we are going through the advanced topics, let us revise that what we have to study actually. That is data science and artificial intelligence. What are the topics that we need to study so that we can score maximum of the statistics thing. So we have prepared yeah, some important concepts so that you can also go with your own, and along with that I will also carry you in that way. Okay, so let us start. Now the basic terms that we should know is number one, what are variables? What are variables? What is a random variable? You know all these things, okay, but I need to discuss what is a random variable. Then number three is population mean, population sample, population population sample लेंगे, population sample. Then population mean, sample mean. Number four, population mean, population mean, comma sample mean. Okay. Then number fourth is population distribution. Fifth is population distribution. Population distribution. Population distribution, sample distribution, comma sample distribution. How the data is distributed actually. This is the meaning is that. Okay. अब ये जो mean median mode है, this is very important. Mean, median, and mode. These are known as measures of central tendency. Keep in mind, measures of central tendency. Central tendency. Okay, these are the measures of central tendency. Then measures of dispersion. Number seventh, how the data is distributed here and there. Okay, it can have, so it is standard deviation or it is a variance. That's the thing. Measures of dispersion. Measures of dispersion. इसमें क्या है? Number one is variance. We'll be doing the numericals on all these things. Okay. Number two is standard deviation. Standard deviation. SD I'm writing it over here. Then number eighth is Gaussian or normal distribution. Gaussian or normal distribution. ठीक है, whatever random variable we select, it is in the जो भी हम random variable, whatever the data we select, it is always in the form of normal distribution. If it is not in always in the form of normal distribution, we will be convert it into the form of normal distribution, and then we will be doing all the calculations. Okay. So normal distribution, what does normal distribution say? It gives us an idea how the data is distributed. It gives us an idea. It gives us an idea how the data is distributed. How the data is distributed. We will take some examples also. How the data is distributed. Okay. So what type of example we can say? Any idea? जैसे example ले लो. Let us take an example. Okay. Okay. This one. ये जो distribution है, this one is log normal. Log normal distribution. It is right scored. ये एग्जाम्पल कैसे किस तरह के एग्जाम्पल यू कैन गिव. सपोज आई एम गिविंग द एग्जाम्पल इनकम ऑफ पीपल.
इनकम ऑफ पीपल, ठीक है। द एज इनकम इंक्रीजेस द नंबर ऑफ पीपल डिक्रीजेस, दिस इज द थिंग, इनकम ऑफ पीपल, and this is the people, as income of people increases, income of people is increasing, the number of people is decreasing, it's going like this, as number of as number of people, as income is increasing, number of people, number of people decreasing. Now let me take one more example. Suppose I am taking one more example. Suppose feedback length. Feedback length में क्या होगा? Number of people decreases much more when comment size is very high. The comment का जो size होता है, when it is very high, then the number of people always decreases. So you can say feedback length. Understood? So this is an example. Okay. Sentiment also follows non-normal distribution. Sentimental analysis also follows non-normal distribution. इसमें क्या किस तरह के? Suppose we have company spending money on various department and we need to find the profit. Example ले लो. Suppose we have a company. Suppose we have a company that for here. Suppose you have a company spending money on various department and you need to find the profit. जैसे दे लो एक कंपनी की R&D डिपार्टमेंट ले लो, R&D एक कंपनी के मैंने लिए, एक मार्केटिंग, एक कैंपेनिंग और इधर क्या है? प्रॉफिट. अब क्या ना, वी नीड टू फाइंड द प्रॉफिट बेस्ड ऑन द पैरामीटर्स. ओके, बेस्ड ऑन दिस थ्री पैरामीटर्स, थ्री, और यू कैन टेक वन मोर ऑल्सो. स्टोर्स, कितने स्टोर्स है कंपनी के? स्टोर जो है कितने स्टोर्स है? एक स्टोर्स डिपार्टमेंट हो गया, स्टोर्स कितने हैं? R&D, मार्केटिंग, कैंपेनिंग, उसके बाद कितनी प्रॉफिट हमारे आ रहे हैं, दैट्स द थिंग. ठीक है. तो आवर कॉलम, ये जो कॉलम्स है, विल हैव अ लॉट ऑफ इनपुट्स. इनपुट्स तो काफी होंगे. ओके, तो विल ऑब्जर्व देयर विल बी लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन R&D, मार्केटिंग, कैंपेनिंग. डिफरेंस तो होंगे ऑब्वियसली. R&D का एक अलग वैल्यू है, मार्केटिंग का अलग होंगे, कैंपेनिंग का अलग होंगे. देयर, सो विल ट्राई टू फाइंड आउट द डिस्ट्रीब्यूशन ईच कॉलम ऑफ ईच कॉलम. हम हर कॉलम की क्या करेंगे? ईच एंड एवरी कॉलम के हमें डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है. वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी कॉलम. Okay, like R&D, marketing, campaigning. Okay, we have to find out the distribution. Suppose R&D follows Gaussian distribution. Suppose R&D follows Gaussian distribution. So what we'll do? We'll convert this Gaussian distribution to standard normal distribution. We'll convert this convert to standard normal distribution. Standard normal distribution. Okay, standard normal distribution में क्या होता है? म्यू इक्वल टू 0 होता है. स्टैंडर्ड डिविएशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1. ओके, ओके, दिस इज द थिंग. दिस इज ऑलवेज, मतलब म्यू क्या होता है? मीन क्या होता है? 0 हो गया, स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू 1. ओके, नाउ सपोज मार्केटिंग कॉलम, सपोज मार्केटिंग कॉलम, मार्केटिंग फॉलोज, हाँ, मार्केटिंग कॉलम फॉलोज log normal distribution. log normal distribution log normal distribution log normal distribution. तो विल बी कन्वर्ट दिस टू स्टैंडर्ड. इसको भी log normal क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट टू स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. Convert to standard normal distribution.
मतलब क्या होता है, फाइंडिंग द लॉग, कैसे निकालेंगे, फाइंडिंग द लॉग ऑफ ईच इनपुट डेटा, ओके, फाइंडिंग द इनपुट ऑफ ईच इनपुट डेटा, सिंपल। अब किस तरह की ईच इनपुट डेटा, मैंने किसके लिए, वी हैव टेकन दिस मार्केटिंग ना, तो मार्केटिंग में जो भी डेटा है, यहाँ 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 पे कुछ एक डेटा होंगे, इसके बाद नेक्स्ट में कोई डेटा होंगे, इस तरह के डेटा तो बहुत सारे होंगे कॉलम्स में ना, विल बी हैविंग लॉट ऑफ डेटा, उसको सबको लॉग, लॉग विल बी यूजिंग द लॉग एंड वी आर गोइंग टू कन्वर्ट टू स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सॉरी, इसको कैसे करेंगे, इसको करने का एक फॉर्मूला है, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसे ऐसे करने के बाद क्या होगा, विल सी दैट, विल सी दैट द मार्केटिंग कॉलम will be on the same scale, on the same scale as R&D column. Okay, understood? जब तक वो सेम स्केल में नहीं आएगा, वी आर नॉट गोइंग टू गेट द करेक्ट आउटपुट, आई एम टेलिंग यू, दैट्स व्हाई यू हैव टू कन्वर्ट इट into the standard normal distribution. Whatever the columns are there, we will simply convert it to standard normal distribution if it is not in normal distribution, I am telling you. Okay, now if I give my model this kind of data, ये जो डेटा है, इसको यदि हम दे दें तो फिर क्या, विल गेट द हायर एक्यूरेसी, ओके, इसको क्या, इफ आई गिव दिस टाइप ऑफ डेटा, अब मैंने, आई हैव कन्वर्टेड इट, सॉरी, आई हैव कन्वर्टेड इट एंड नाउ आई एम गिविंग दिस टाइप ऑफ डेटा टू माय मॉडल, then we'll get higher accuracy. Keep in mind, the whole process is called log normalization. The whole process is called log normalization. Okay, keep in mind. One topic is where covariance. Covariance, that we'll discuss. Covariance, we'll discuss later on. But keep in mind, covariance is very important. We need it. Discuss later on. With respect to machine learning, I will be discussing this, so it will be easy to understand how it is being used. That's why I'm keeping this thing. Okay, we'll be doing in the next class. Then mean median mode. Mean median mode. Here I am not finding what is the mean or something like that. When I want to say what would happen, what are the impact of mean median mode over there in the data, that I need to tell you. Okay, mean median mode. This is very important. सैंपल में क्या है, सैंपल हाइट ले लो, सैंपल हाइट में ले लो 168, 170, 140, 182, 150, 175, ऐसे कुछ ले लिया मैंने डेटा। ओके, तो म्यू इक्वल टू हाउ मच, 1 by n summation of I equal to 1 to n xi. Okay, all the data, we will add all this data and divide it by total number of data, 1 2 3 4 5 6. Suppose the value is 63.5, example, 63.5, तो क्या हो गया, 63.5 is the measure of central tendency. This is the measure of central tendency. This is the measure of central tendency. Measure of central tendency means most of the data will fall in this particular region, will fall
in this particular region. Okay. Actually मुझे बहुत जुकाम, I got cold actually, so that's the issue. So if you increase the distribution of sample, we will get a curve like this. If you increase the distribution of sample, okay, curve किस तरह के curve मिलेंगे? Let me see. This is the thing, and this the यहीं पे data source ज़्यादा है, तो this one mu equal to 63.5. Okay, this is in Gaussian distribution. Gaussian distribution. Okay, this is the Gaussian distribution. Now, if I have a data set 1, 2, 3, 4, 5, so mu equal to 3, तो fine, कोई problem नहीं. लेकिन if you have an outlier in the data set, a data outlier also you know, I have already discussed that outlier. जैसे example ले लो, 1, 2, 3, 4 और एक बार 98 ले लिए, एक डेटा ले लिया 98, तो this 98 is the outlier. This 98 is the outlier, okay. तो क्या हो गया, अब जब 98 आउटलायर हो गया तो इसका मीन म्यू इक्वल टू कितना हो गया, म्यू इक्वल टू इट विल अफेक्ट हाईली अफेक्ट द मीन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो. लेट मी कैलकुलेट इट. 4 3 12 4 3 7 to 9 1 10 98 at 10 4 3 7 to 9 108 by upon 1 2 3 4 5 5, so 5 21 105 21 point something, okay, 21 point something. So the difference of mean is used. ये देखो आप मीन एक्चुअली क्या होता है, 1 2 3 4 करते हैं, 4 3 7 2 9 1 10, 10/4 करते हैं, 10/4 यू हैव डन, तो क्या होगा 2.5 होता है, एंड वी आर गेटिंग 21, तो क्या होगा, डिफरेंस इज वेरी हाई, विच इज हार्मफुल, विच इज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर डूइंग एनी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे जो आउटलायर है, वी हैव टू रिमूव दिस आउटलायर. ओके, so we have to remove this outlier. Otherwise we can do one thing, we can use median. In this case we use median. मीडियन, तो मीडियन में क्या होगा, मीडियन में ये मीडियन कैन हैंडल आउटलायर्स. एक्चुअली इट कैन हैंडल आउटलायर्स. ओके, दैट्स राइट. होप आप लोग क्लियर हो गए. अब क्या होता है, ये मीन मीडियन मोड और एक यू कैन यूज इट समवेयर एल्स आल्सो. जैसे लॉट ऑफ डेटा इज देयर, मार्केटिंग के डेटा है, जैसे क्या क्या है, आर एंड डी, फिर मार्केटिंग, फिर सेल्स, so many columns are there. यहाँ पे डेटा है, यहाँ पे भी डेटा है, यहाँ पे भी डेटा है. इट माइट हैपन दैट देयर आर सम मिसिंग वैल्यूज इन बिटवीन, देयर माइट बी सम मिसिंग वैल्यूज. तो मिसिंग वैल्यूज में क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू पुट दिस मीन मीडियन और मोड, वी कैन इम्प्यूट. ओके, बिकॉज क्या होता है, वेन एवर डेटा इज फिट देयर माइट बी सम एरर्स. ओके, देयर माइट बी सेम एरर्स, तो क्या करेंगे, वी हैव टू इम्प्यूट द मिसिंग वैल्यूज. कैसे, जैसे नॉर्मली क्या करते हैं, हम मीन यूज करेंगे. ओके, नॉर्मली मीन, सपोज मीन भी यूज कर सकते, कोई ऐसे एक डेटा सेट है जिसमें क्या है, जैसे 20 मैक्सिमम टाइम्स 20 रिपीट हुए. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मिसिंग वैल्यूज में क्या करेंगे, हम 20 को वी आर गोइंग टू इम्प्यूट 20 ओवर देयर. ओके, वी आर गोइंग टू इम्प्यूट मतलब क्या है, जो मिसिंग वैल्यूज है, मिसिंग वैल्यू जहाँ पे है उस जगह में हम 20 डाल देंगे, सिंपल मोड मोड डाल देंगे. जैसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिस वैल्यू, जिस डेटा का होगा, यदि कोई ऐसे एक वैल्यू है जो बार बार रिपीट हो रहे, तो जहां पे भी मिसिंग होगा वहां पे क्या करेंगे, वही वैल्यू हम डाल देंगे, मतलब मोड को हम डाल देंगे, वी आर गोइंग टू पुट मोड. अदरवाइज क्या करेंगे, मीन हम यूज करते हैं. अंडरस्टूड, कीप इन माइंड. नाउ वन टॉपिक इज देयर, दैट इज सेंट्रल लिमिट थ्योरम. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल लिमिट थ्योरम. देखो आज न्यूमेरिकल्स, लेट मी एक्सप्लेन द टॉपिक्स, उसके बाद क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करते करते हम लोग आगे चलते रहेंगे. सेंट्रल लिमिट थ्योरम. सेंट्रल लिमिट थ्योरम
अब सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या है? सपोज ए रैंडम वेरिएबल x मे और मे नॉट बी ए गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन. सपोज रैंडम वेरिएबल x ले लो. हाँ, may or may not be a Gaussian distribution. Okay. Now, so suppose I take samples from X. Take samples from X, where n greater than equal to 50 ले लिए मैंने. 50 डेटा पॉइंट्स मैंने ले लिए. सैंपल्स दो लिए, 50 लिए मैंने. 50 टोटल क्या कितने लिए मैंने? 50 लिए. ओके. एंड वी आर सिलेक्टिंग n. क्या? n इज द डेटा पॉइंट. n इज द डेटा पॉइंट. डेटा पॉइंट. डेटा पॉइंट मतलब x है. x कहीं 20 है, कहीं 30 है, कहीं 40 है, कहीं 10 है. इस तरह दीज आर द डेटा पॉइंट्स. इसको डेटा पॉइंट बोलते हैं. कीप इन माइंड. ओके. तो क्या हुआ? टेक सैंपल्स फ्रॉम x वेयर n ग्रेटर देन इक्वल टू 50 और n को क्या बोलते हैं? डेटा पॉइंट. मैंने 50 ले लिए मैंने. ठीक है. So we are selecting the data points randomly. Okay, we are taking the data points randomly. Not that we are going to select according to my comfort. Okay, it's not like that. We have to select it randomly. Then only we are going to get the proper value. I mean to say. तो एक S1 सैंपल है जिसमें N1, N2 अलग अलग है. ठीक है. डॉट. तो मीन इक्वल टू कितना हो गया? X1 बार. ओके. अब S2 सैंपल है, वहां पे भी N1 N2 करके ऐसे करके लेते रहेंगे. N1 ये मैंने कुछ भी हो सकता है. ठीक है. 50 सैंपल्स मैंने ले रहा हूं. मीन इक्वल टू X2 बार. ये S1 मतलब P1, ये P2, कहीं भी N1, कहीं N1 है. इस तरह से मैंने रैंडमली हम सिलेक्ट कर रहे हैं अलग अलग सैंपल. एक ही डेटा सेट से हम अलग अलग सैंपल्स क्रिएट कर रहे हैं और मीन सारे वी आर गोइंग टू फाइंड द मीन्स ऑफ ऑल द सैंपल्स. ओके. अब क्या करेंगे? विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम वी प्लॉट दिस x1 एंड x2. विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम. विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम. हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम. We plot x1 bar, x2 bar. Mean. These are the means. x1 and x2 bar. These are the means. Okay. So what it says? x mean. माने पूरे दोनों के x1 x2 दोनों के जो mean है equal to Gaussian distribution. Gaussian distribution. यहाँ पे mu sigma square by n. ओके. सिग्मा स्क्वायर बाई एन. इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम. अब ये तो मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं है व्हाट आई एम राइटिंग ओवर हियर. ओके. तो ये मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी. तो व्हाट इज CLT? CLT is central limit theorem. We told you that central limit theorem we are learning. So what CLT says? CLT explains that let the random variable be of any distribution. कोई भी distribution चाहो. Okay. And if we take multiple samples, we are taking multiple samples. ऐसे करके S1, S2 ऐसे करके हम samples लेते रह रहे हैं. ठीक है. And if we take multiple samples, where number of data points n greater than equal to 50, and finding the mean of multiple samples. If we plot these samples, यदि x1, x2 ये सारे यदि मैं plot कर दूं samples को, then it follows a Gaussian distribution. It is whatever distribution it will follow this with mean equal to mu. With mean equal to क्या होगा? Mean equal to mu and variance equal to sigma square by n. Variance equal to sigma square by n. This one sigma square. Okay. Sigma square by n. Okay. Keep in mind this thing. Whatever I am telling you, why I am teaching this theoretical thing is that it has a great significance. When we will be taking the questions and we will be getting the questions in GATE, it will have a great impact over there. Directly solving the numerical and not understanding the concept won't help you. So you should know where this central limit theorem is used and what is the usefulness of this central limit theorem. It is very important to know. That's why I hope you understood the thing. That if we plot these means, जैसे ये सारे means है x1,
x1 x2 इसको यदि आप मीन को प्लॉट करोगे तो वी विल गेट ए गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन वॉट एवर इट मे बी ओके with mean equal to mu and variance equal to sigma square by n. Keep in mind. अब आप लोगों को क्लियर हो गया एंड इफ यू हैव एनी डाउट तो डू comment on the comment section or you can do one thing you can message me in the group also okay Google group we have created a Google group you do not you people are not studying properly that's why there are no messages no doubts that's the thing okay time is running out I'm telling you lectures are coming and lectures will be coming in continuous mode very soon we will be coming with continuously will be coming because in this month we will be covering this whole topic this statistics and that one more topic is there what is that topic I hope आप लोगों को पता है कौन सा टॉपिक थे let me see I also forgot teaching and let me check हाँ linear algebra we will be covering and we will be and along with that we are doing data DBMS we are doing DBMS also you know we are doing DBMS also will be covering this month only and along with that what we will be covering we will be covering also data structure हमारा एम है डीबीएमएस डेटा स्ट्रक्चर उसके बाद क्या है ये दिस कैलकुलस वी हैव कवर्ड कैलकुलस यही करना है आपको ठीक है और उसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे टेस्ट पेपर्स एक मैंने सैंपल देयर आल्सो मेनी पीपल हैव मिस्ड इट आई हैव नॉट येट डिक्लेयर्ड द रिजल्ट वी विल बी कमिंग विद द रिजल्ट आल्सो एक तो वो तो दैट वाज अ डेमो सेशन तो एक्चुअली वी आर बिजी विद द लेक्चर्स तो क्या करेंगे ये करने के बाद वी विल बी कमिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ from the date October 20 or 17th, we'll be coming with full-fledged test. There you have to be very serious. I'm telling you, we'll be coming with full-fledged test. Many people will join over there. Okay, so you have to be you have to complete all these topics. Okay, and data structure. One over data structure we will be covering. DBMS will be covering. Calculus will be covering. Okay, numerical analysis, numerical techniques, or you will be covering all these topics. You will be covering, and we will be left with what this machine learning, then data mining, data warehousing, and data mining, DWDM, and number third is artificial intelligence. This will take a lot of time. These are very important. Okay, this will take a lot of time. Unless we cover these topics, you won't understand a single thing on this. Okay, so I told you in the month of December 31st, I will be covering we will be covering the whole syllabus. I'm telling you. So what we will do in the till month October or October के 10 तक we will be covering the whole topic. ये topic मुझे cover करना ही होगा. After that we will be going with all these three topics. Okay, machine learning, data analysis, data mining, and AI because these are very important topics and it will take a lot of time. And these are all deadly concepts. I'm telling you. It will confuse you. This is like a puzzle. I'm telling you. So these things we'll be covering because if you know the topics, then also you'll be doing mistakes. I'm telling you. Your head will start paining. It will happen like this. Okay, it's not that easy. So we have kept 2 months for all three topics. So till then, by that time we'll be covering these things. Understood? That's the thing. Numerical techniques, linear algebra. I mean to say. Numerical techniques, मतलब linear algebra. I mean to say. Okay, hope आप लोग को clear है बात. Now where I was there? Now we will go to Chebyshev's inequality. That is also very important. कुछ theoretical part है we should know. Chebyshev's inequality. Chebyshev's inequality. Chebyshev's inequality. अब ये क्या होता है? What is this Chebyshev's inequality? See, let's see. We know that probability distribution is not yet completed. We will be covering that topic also. Okay. First, let me go through these things. These are small topics we should know. Okay. That's why we are doing this. Okay. Distribution is not yet completed. Two, three distributions are left that we will be doing because that has a great significance on machine learning algorithms. We know that when x follows Gaussian distribution with mean mu and standard deviation, variance you can say sigma, then probability of mu minus sigma less than equal to x less than equal to mu plus sigma.
अब ये तो बिल्कुल समझ नहीं what are these things, ये हम देखेंगे, we'll see all these things. Then probability of mu minus 2 sigma less than equal to x less than equal to mu plus 2 sigma. Okay, and probability of mu minus 3 sigma less than equal to x less than equal to mu plus 3 sigma. ओके, और इसको क्या बोलते हैं, दिस आर नोन, हाँ ये है 68%, ऑलमोस्ट इक्वल टू 68%. लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली, प्लीज वेट. 68%, then this one is 95%. ओके, कहाँ लिखा मैंने, सी वेयर आई एम राइटिंग, this one is 68%, this one is 95%, and this one is 99%. और ये क्या है, ये सारे एम्पिरिकल फार्मूला है, एम्पिरिकल फार्मूला, वी नीड ऑल दीज थिंग्स. एम्पिरिकल फार्मूला. सपोज ये तो मतलब ये दिया हुआ, इट्स गिवन, इट्स ऑलवेज गिवन. ओके, इट्स ऑलवेज गिवन. तो forget about this. Now let me give you an example. Suppose I have another distribution which does not follow Gaussian distribution. वो Gaussian distribution follow नहीं कर रहा, मतलब क्या हुआ, एक है data that is not following Gaussian distribution, that is not following Gaussian distribution. Is it clear? For this we use, यदि follow नहीं कर रहा तो we use for this we use Chebyshev's inequality. Chebyshev's inequality. Okay, for this we use Chebyshev's inequality. मतलब क्या है, probability of mu minus k sigma less than x less than mu plus k sigma. And what is k, ये k आ गया ना, k can be 1 2 3. यहाँ पे देखो k का वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे k का वैल्यू 2 है, यहाँ पे k का वैल्यू 3 है. That's what I have written over here. Okay, which is greater than 1 minus 1 by k square. Okay, we'll see this. What is this? Let k equal to 2. Let k equal to 2. The probability of k minus mu minus 2 sigma less than x less than mu plus 2 sigma, which is greater than 1 minus 1 by 4 equal to 3 by 4, I think 3 by 4, which is equal to 75%. ये तो clear है, which basically states that if my data does not follow Gaussian distribution, then more than 75% of the data points belong to this distribution will be falling within the range of second standard deviation. नहीं समझ आया, एक मिनट, उसका मतलब क्या है, एक सेकेंड, which states that 75% यहाँ पे है, ये तो समझ आ गया 75%, which states that, let me write it, which states that if my random variable does not follow Gaussian distribution, does not follow Gaussian distribution, then more than 75% of the data points belonging to this random variable y
will be falling, random variable y will be falling, within the range of second standard deviation. Okay, second standard deviation. ओके, यदि k इक्वल टू 3 हम यूज करें, k इक्वल टू 3, तो ऑटोमेटिक इट विल बी 8/9, 8/9 विच इज 85%. तो क्या होगा, थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन. दैट मीन्स द मोर देन 85% ऑफ द डेटा फॉलिंग विद इन द रेंज ऑफ थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन. अंडरस्टूड? दिस इज द मीनिंग. दिस इज Chebyshev inequality. Simple. Now we are going to talk about outlier. आउटलायर्स हमें पता ही है, तो आउटलायर के कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? थ्रू जेड स्कोर, एक्स माइनस बी बाई सिग्मा जेड इक्वल टू, इससे हम निकाल सकते हैं. नंबर 2, आई क्यू आर, वी ऑलरेडी डिस्कस दिस, इंटर क्वार्टाइल रेंज. और एक थर्ड है बॉक्स प्लॉट. तो बॉक्स प्लॉट की हमें जरूरत नहीं, यू शुड नो द टर्म बॉक्स प्लॉट. बॉक्स प्लॉट से भी हम निकाल सकते हैं, बट दैट इज अ प्रैक्टिकल यूज, वी डू नॉट नीड दैट. अब हाउ दिस जेड इज वर्किंग, दैट वी नीड टू नो. आई क्यू आर तो वी हैव डिस्कस्ड. नाउ मैंने जेड स्कोर बोला था, हाउ जेड स्कोर, इन जेड स्कोर इट इज वर्किंग. लेट अस सी Z score. We are going to discuss about Z score. Suppose I have a data set 1, 2, 3, 4, 5. ये एक data set है, okay? And let 5, 4, 9, 3, 12 to 14 and 15. 15 by 5. तो mean क्या है? Mean equal to 3 and standard deviation equal to 1. 1 के ज़्यादा ये नहीं है, ठीक है? It's fine. Now we want to convert this into a standard normal distribution. We want to convert to standard normal distribution where mu equal to, mu क्या होता है, mu equal to 0 होता है और sigma equal to 1 होता है. इसमें मुझे कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? उसके लिए फॉर्मूला z इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. दिस इज देयर. ओके, तो ये इस फार्मूला में जब हम जब इस फार्मूला में डेटा को हम डालेंगे तो व्हाट विल गेट द ऑटोमेटिकली गेट द नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, तो व्हाट जेड स्कोर बेसिकली सेज दैट इन व्हाट स्टैंडर्ड डिविएशन डेटा फॉल्स इन. कौन सा डेटा स्टैंडर्ड डिविएशन में फॉल करता है? एनी डेटा दैट फॉल्स आफ्टर द थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन आर बेसिकली कंसिडर्ड आउटलायर्स. ओके, एनी डेटा that falls after the third standard deviation are basically considered outliers. Okay, we will take an example regarding this. Regarding finding the outlier through Z score. Okay, we are going to take a different example, not the previous example. Okay, so let me tell you, IQR we have already completed. Box plot is not required, but you should know that box plot is used in Python to find outliers. Okay, that is all. Okay, we are not going to go into the details of the box plot. Okay, but these are very important. From the statistical constants, this Z score and IQ are important. IQ you have already covered, and Z score you have to cover. Okay, so Z equal to x minus mu upon sigma. Z is the Z score, x is the data point, mu is the mean, and sigma is the standard deviation of the data set. Okay, now when we need to find the outlier, so there must be some threshold. थ्रेशोल्ड मतलब क्या होता है? जिस थ्रेशोल्ड के बाहर माने क्या होता है, जैसे x ग्रेटर देन 10 ले लो, 10 से ज़्यादा जो भी होगा तो वी कंसिडर दैट एज आउटलायर. या x लेस देन 100 ले लो, x 100 से जो छोटा होगा तो दैट विल बी कंसिडर्ड एन आउटलायर. ऐसे कुछ यदि वी कैन वी विल सेट सम थ्रेशोल्ड अकॉर्डिंग टू अस ओनली. Okay, so especially means maximum time what threshold we take z greater than 2 or z greater than 3 or z less than 2 minus 2 or z less than minus 3. We take these thresholds especially, but in general we take these thresholds. Okay,
Now let's just take one data set. We have already written over here 75, 80, 85, 90, 95, 40, 98, 92, 88, 70, you have taken. Now mu is the mean. Mean you have to find out, you find out the sum of all these data points and divided by how many number of data points, that is 11. So 82.73 you find out. Okay. For standard deviation, what we do, because we need to find out the standard deviation also, because that mu and standard deviation, this is must. This we have to find out from the data set first. So how to find out that? For that, what we do? Find out the square difference between the data point and the mean. मतलब क्या करेंगे 75 माइनस 82.73 होल स्क्वायर, जो भी वैल्यू आएगा, मैंने वैल्यू लिखा नहीं, x1 लिख दिया, ठीक है, यू कैलकुलेट इट ऑन योर ओन. नाउ 80 माइनस 82.73, 80 माइनस 82.73 उसका होल स्क्वायर करके जो भी वैल्यू आएंगे, ऐसे करके 85 माइनस 82.73 जो भी वैल्यू आएंगे, ऐसे करके लास्ट वैल्यू 82 है, तो 82 माइनस 82.73 का होल स्क्वायर, तो जो भी वैल्यू आएंगे x1 x2 करके x11. सपोज 11 डेटा पॉइंट्स है तो 11 डेटा पॉइंट्स. ओके. नाउ फाइंड आउट द मीन ऑफ दिस वैल्यूज. तो क्या होगा, ये सारे ऐड करके अपॉन 11 यदि करेंगे तो यू विल फाइंड द वेरिएंस. सपोज तो स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस. स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस मतलब क्या होगा, वट एवर विद मीन, वो स्क्वायर रूट के अंदर जाएंगे एंड यू आर गोइंग टू गेट दिस वैल्यू 17.56. प्लीज कैलकुलेट इट ऑन योर ओन एंड यू विल गेट टू नो. ओके. तो z इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. वी पुट दिस वैल्यूज ओवर हियर. और ये जो x है, x आर द डेटा पॉइंट्स. वी ऑलरेडी टोल्ड दैट x इज द डेटा पॉइंट. अब हम क्या करें, व्हाट विल डू, वट एवर भी द डेटा पॉइंट्स, यहाँ पे डेटा पॉइंट्स है 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके सारे डेटा पॉइंट्स को क्या करेंगे, पुट करेंगे. कहाँ पे पुट करेंगे, दिस फार्मूला में. z इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, इस फार्मूला में पुट करेंगे. और यदि ग्रेटर देन 2 है या ग्रेटर देन 3 है, या जो भी थ्रेशोल्ड आप लिए, ग्रेटर देन 3 ले लिए या ग्रेटर देन 2 सपोज लिए, और लेस देन 2, ये दोनों थ्रेशोल्ड की जो बाहर होगा, ठीक है, ग्रेटर देन 2 होने से क्या होगा, दैट विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज एक आउटलायर, और लेस देन 2 होगा तो दैट इज आल्सो कंसीडर्ड एन आउटलायर. जैसे 75 लिए, 75 माइनस 82.75 अपॉन 17.56 करने से माइनस 0.441, तो ये क्या हो गया, दिस इज ग्रेटर देन -2, तो फिर क्या होगा, दिस इज नॉट एन आउटलायर. ओके. लेकिन x इक्वल टू 40 माइनस 82.75 अपॉन 7.556 करें तो यू आर गेटिंग माइनस 2.543, व्हिच इज लेस देन 2. तो फिर क्या होगा, दैट मीन्स दिस 40 इज द डेटा पॉइंट दैट इज एन आउटलायर, वी कंसीडर इट एन आउटलायर. ओके. दिस इज द थिंग. होप आप लोग की कैलकुलेशन समझ में आ गया है. ठीक है. नाउ रीजंस फॉर एन आउटलायर टू एग्जिस्ट इन डेटा सेट, क्या है रीजन, वेरिएबिलिटी इन द डेटा, एंड नंबर 2 इज एन एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट एरर. दो ही हो सकता है, मेजरमेंट एरर हो सकता है या वेरिएबिलिटी. Okay, impact of outlier क्या होता है, it can cause various problems during statistical analysis. It may cause a significant impact on the mean and the standard deviation. वो आप लोग को ये clear हो गए. Okay, so this is the way to find out the outlier. You should keep in mind this is a very important concept. This will be used in future. Okay, now we will go to standardization and normalization. Then the next thing, so what is the reason for an outlier to exist in a data set? There must be some reason for the outlier to exist. What is the reason? Reason for an outlier to exist in a data set. Okay. Please pause the lecture and think on it. If you can think on it and then come to the conclusion. I'm doing it. You just pause it and think on it. First is variability in the data. Variability in the data. And the second point is an experimental measurement error. An experimental measurement error. Measurement error. Okay. What are the impacts of having outliers? Okay, impact of outlier. It causes various problems. It causes various problems during our statistical analysis. During statistical analysis, यदि ज़्यादा हमारा outlier है, during statistical analysis. Okay, it may cause a significant impact. Number 2, it may cause
a significant impact. It may cause a significant impact on the mean and the standard deviation. On the mean and the standard deviation. Okay. चलो ये तो क्लियर हो गए. अब we are going to discuss two terms there, standardization and normalization. That is also very important. Standardization and normalization. Standardization and normalization. Okay. तो वही ये अब जब हमारा जो डेटा सेट है, वट एवर योर डेटा सेट, वी हैव मेनी फीचर्स एंड इट इज कंप्यूटेड बाय डिफरेंट यूनिट्स एंड मैग्नीट्यूड. यू नो दैट वेट जो किलो होंगे, ठीक है, हाइट यदि करेंगे तो सेंटीमीटर होंगे, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. तो क्या होगा, मशीन लर्निंग फॉर ए मशीन लर्निंग एल्गोरिथम द डेटा दैट वी प्रोवाइड वी शुड स्केल डाउन दैट पर्टिकुलर डेटा इनटू सम स्केल. हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कोई स्केल में लाना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज द डेटा. ओके, तो उसके लिए हम कुछ टेक्निक्स जो स्केलिंग डाउन द डेटा सेट, स्केलिंग, यू कैन से स्केलिंग डाउन द डेटा टू ए कॉमन स्केल, टू अ कॉमन स्केल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, और इसको करने के लिए दो टेक्निक है, एक है स्टैंडर्डाइजेशन and number two is normalization. अब स्टैंडर्डाइजेशन क्या करते हैं, व्हाट स्टैंडर्डाइजेशन डज, स्टैंडर्डाइजेशन जो है, ओके, स्टैंडर्डाइजेशन क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन, लेट मी टॉक अबाउट स्टैंडर्डाइजेशन. स्टैंडर्डाइजेशन, ओके, standardization what it does, it scales down the feature, scales down the feature between 0 to 1. Okay, it is based on mu equal to 0 and sigma equal to 1. माने ये क्या है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यू कैन से स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. वो कन्वर्ट कर देते, पूरी डेटा को इसी तरह कन्वर्ट कर देते टू स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. फॉर दैट यू कैन यूज स्टैंडर्डाइजेशन. इसमें क्या होता है, ये कब करते हैं, व्हेन द डेटा इज नॉट इन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. जब नहीं है तब हमें ये करना पड़ता है. और नंबर टू, जब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में है तो हम क्या करेंगे, नॉर्मलाइजेशन यूज करेंगे. नॉर्मलाइजेशन क्या करता है, नॉर्मलाइजेशन normalization सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती किया, स्केल्ड ऑन द फीचर बेस्ड ऑन between, not this is not between, based on mu equal to 0, sigma equal to 1. और normalization scales down the feature between 0 to 1. keep in mind. अब क्या होता है इन पाइथन, अब हम लोग यू हैव लर्न पाइथन आल्सो, यू हैव गॉन थ्रू द लेक्चर्स. तो पाइथन में ये आ सकते पेपर में, इन पाइथन min max scalar is normalizing. And in Python, standard scalar is standardizing. Okay, this is the thing. होप आप लोग क्लियर हो गए. तो अब आप लोग क्वेश्चन है, व्हेन वी शुड डू यूज स्टैंडर्डाइजेशन एंड नॉर्मलाइजेशन. तो क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन परफॉर्म्स वेल. ओके, ये जो क्या होता है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में, यू कैन से इन मशीन लर्निंग एल्गोज standardization
standardization, performs well, performs well. Okay, और ANN जो डीप लर्निंग के एल्गोज है, ANN एंड CNN, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, इसमें क्या होगा, we mostly use standardization. होप आप लोग को क्लियर है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द p वैल्यू. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, p वैल्यू. अब p वैल्यू क्या है? p वैल्यू है, इट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर द नल हाइपोथेसिस टू बी ट्रू. ओके, अब हमने तो हाइपोथेसिस का टॉपिक किए नहीं है, तो वी शुडंट गो फर्दर इनटू दिस हाइपोथेसिस. ओके, वी विल बी गोइंग लेटर ऑन. अब एक क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ राइट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन. राइट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जाम्पल क्या क्या है? जैसे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन फॉल्स ऑन द राइट साइड, मोर पीपल, मोर वेल्थ लेस पीपल, यू नो. उसके बाद क्या सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? सम पीपल लाइक टू राइट लॉन्गर कमेंट्स प्रोबेबली आफ्टर सीइंग वीडियो, वेरी फ्यू पीपल फॉलो दिस कैटेगरी. तो ये दो हो गया राइट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब आपने नोट डाउन. ओके, एंड एग्जाम्पल ऑफ लेफ्ट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन हमने ये ड्रॉ करके दिखाए. लेफ्ट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जाम्पल क्या है? लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन बीइंग. ओके, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ life that is example of left skew distribution. Okay, and one more thing, in right skew distribution, forget p value. P value we will discuss in the next lecture. In right skew distribution, mean is greater than median, median is greater than mode. This is the relationship, keep in mind. Okay, in normal distribution, नॉर्मल जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें क्या है? मीन is almost equal to median is almost equal to mode. In left skew distribution, mode is greater than median, greater than mean. ये सारे आप लोग को दिमाग में रखने पड़ेंगे. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. we need to use these things in future. Okay, keep in mind. और क्योंकि मुझे थोड़ा स्पीड में करना पड़ेगा, तो these things you keep in mind, ये यूज करेंगे हम. ठीक है, अब एग्जांपल लो, हाउ टू फाइंड आउट द एवरेज साइज ऑफ शार्क्स इन द इंटरसी. कैसे? हाउ टू फाइंड द एवरेज साइज ऑफ शार्क्स इन द इंटरसी, ये आप लोग खुद सोचोगे. एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, हाउ टू फाइंड द एवरेज साइज ऑफ शार्क्स, एवरेज साइज of sharks in the entire sea. Okay, please, this is a homework, please try. Okay, please try and comment on the comment section, or you can go to the Google group and answer me. Google group and answer this question. Okay, this is very important. We need okay, this is important. We should understand what is this. होप इतना तो क्लियर हो गया, तो इतना आप लोग कीजिए. उसके बाद वी आर कमिंग विद डीबीएमएस का मैं एक और लेक्चर लूंगा. एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, मुझे डीबीएमएस इस मंथ में मुझे खत्म करना पूरा डीबीएमएस को. डीबीएमएस गेट्स ओवर, तो फिर वी विल बी लेफ्ट विद 3 पेपर्स ओनली. अर्लियर वी डिस्कस दैट थिंग, वी आर लेफ्ट विद 3 पेपर्स. तो 3 पेपर्स में हम लोग 2 मंथ्स पूरा लगाएंगे. ठीक है, दोज आर द 3 पेपर्स, द मोस्ट क्वेश्चंस विल कम. दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स. ये कॉन्सेप्ट्स वी आर गोइंग टू यूज ओवर देयर. ओके, तो दैट्स ऑल. थैंक यू, बाय एंड ऑल.